South Asia, Central Asia, and Middle East and Africa converge positions Pakistan as a natural maritime bridge between East and the West. Yet, despite these advantages, the maritime sector currently contributes less than 1% to our GDP, compared to 4 to 7% in many maritime nations. This gap represents the untapped opportunity and strategic imperative for our national development. Under the visionary leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, Pakistan has embarked upon a bold reform and growth agenda, Udan Pakistan, which aims to transform Pakistan into a $1 trillion economy by 2035. At its heart lies the 5 E's framework: exports, e-Pakistan, environment and climate change, energy and infrastructure, and equity and empowerment. Our integrated blueprint for economic renewal and national progress. Within this framework, we have identified 8 key drivers of export-led growth, which will propel Pakistan towards the goal of achieving 100 billion plus in annual exports by 2035. The 8 areas: agriculture and food processing, manufacturing and industry, information technology and digital services, mining and minerals, manpower and skills export, creative and cultural industries, services sector including tourism, and blue economy. Among these, the blue economy stands out as a transformative pillar capable of linking all other through trade, logistics, energy, and innovation. To unlock this potential, Pakistan is undertaking a series of strategic initiatives. We are modernizing ports of Karachi, Port Qasim, and Gwadar into smart, green, and efficient logistics hubs, operationalizing Gwadar International Airport to connect the world's trade corridors through Pakistan, upgrading Karachi shipyard and engineering works, and reviving Gadani ship recycling industry on sustainable lines, reforming fisheries and aquaculture sectors to increase value-added seafood exports, promoting coastal and marine tourism along Balochistan and Sindh coasts, exploring offshore renewable energy and marine mineral resources, integrating green maritime technologies to ensure environmental sustainability and global competitiveness. Ladies and gentlemen, each of these initiatives signals to the world that Pakistan is open for business, innovation, and collaboration, and that our seas are ready to serve as engines of collaboration and prosperity. The Quran cautions us, and do not cause corruption on the earth after it has been set in order. This divine principle of mizan, balance, guides our approach to the blue economy. We must pursue growth without greed, progress without pollution, and prosperity without depletion. Our coastal communities must be the first beneficiaries of maritime development, gaining livelihoods, education, and empowerment from the opportunities the blue economy will create. Sustainable development is not just an economic necessity, it is our moral responsibility. Excellencies, distinguished guests, the seas connect, they do not divide, and so must our efforts. PIMEC provides a powerful platform for partnerships between government, industry, academia,
and the international community. Through this forum, we can forge collaborations in shipbuilding and logistics, marine biotechnology and aquaculture, digital port management and artificial intelligence, renewable offshore energy, coastal tourism and services. Pakistan welcomes our international partners to join hands in investment, innovation and capacity building. Together we can transform the Indian Ocean region into a hub of sustainable trade, growth and peace. Ladies and gentlemen, the Pakistan International Maritime Expo and Conference is not just an event. It is a movement to reimagine Pakistan's economic destiny from the land to the sea. As we embark on the journey to a $1 trillion economy, the blue economy will be one of our anchors of export-led growth, a source of jobs, innovation, and prosperity for generations to come. Let us draw our inspiration from the Quranic wisdom that invites us to seek of His bounty and be grateful by turning our seas into engines of opportunity, connectivity, and peace. Let me also here say that with nearly 70% of our planet covered by water, the blue economy holds the greatest promise for humanity's future. And it is my dream that the great puzzle before us is how quickly human genius can crack the code to turn the boundless oceans into sustainable source of fresh water for our farms and our people. With this vision, I formally declare the Pakistan International Maritime Expo Conference 2025 open. Pakistan Zindabad. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल का मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ी वस्ती के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम है। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। यहाँ आपको बताएं, पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर गुज़िश्ता रोज़ थाना CTD में धमाके से मुतालिक महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आपको बताएं कि माल खाने में बारूद, दस्ती बम और दीगर केस प्रॉपर्टी मौजूद थी। रिपोर्ट में ये बताया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ धमाके में हेड कांस्टेबल शहीद जबकि 3 अहलकार ज़ख्मी हुए थे और इस हवाले से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक अपने नाज़रीन को बताएँ कि वाक़े से मुतालिक महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की तफसीली रिपोर्ट के हवाले से आपको बताएं कि माल खाने में साल 2025 के दौरान मुल्ज़िमान से बरामद होने वाली चीज़ें रखी गई थीं। धमाके से थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके में हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद जबकि 3 अहलकार ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट की तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़ाहिद इमदाद। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले CTD थाने में धमाके की रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। इसमें जो है धमाके की मुतल्लिक तफसीलात दर्ज है, जिसमें धमाके की जो वक्त है वो 7:58 पर CTD के मालखाने में धमाका हुआ है। ताहम यहाँ जो मालखाना है वहाँ पर 2025 के दौरान जितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए थे उनसे बरामद होने वाले जो असलहा और दीगर चीज़ें हैं वो रखी गई थी। ताहम धमाके के बाइस जो इमारत है उसको शदीद नुकसान पहुंचा एक हिस्से को। ताहम इसके साथ साथ जो धमाके के नतीजे में एक कांस्टेबल शहीद जबकि 3 दीगर जो पुलिस एहलकार थे उसमें जख्मी हुए हैं, जबकि तीनों जख्मियों की जो हालत है वो इस वक्त खतरे से बाहर है। इसके साथ साथ जो मालखाना है वहाँ पर बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड समेत दीगर जो केस प्रॉपर्टी थी वो मौजूद थी, जिसके साथ साथ 23 अदद जो ग्रेनेड्स थे, RPGs थी और समेत दीगर जो इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक जो जितनी भी डिवाइसेस थी वो वहाँ पर मौजूद थी। गुज़िश्ता रोज ये धमाका पेश आया था जिसमें एक एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हुए थे। जी बहुत शुक्रिया आपका जाहिद।
खबर आपको देंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टील सेक्टर में कंपटीशन की सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में स्टील सेक्टर को दरपेश मुसाबकती चैलेंजेस और पॉलिसी खला की निशानदही की गई है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइएगा तफसीलात। जी, मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में गैर मयारी स्टील की पैदावार 60% तक होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बायस सारिफिन के मफादात मुतासर हुए हैं। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक चीन और भारत की तर्ज पर स्टील सेक्टर के लिए अलहदा वजारत के क़याम की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी स्टील पॉलिसी न होने से सनत गैर यकीनी और बेज़ाब्तियों का शिकार है। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2015 से गैर फाल है। 400 अरब रुपए के वाजिबात का बोझ बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक पाटा से बगैर टैक्स स्टील की मुंतकिली से 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में टैक्सी सलाहत, मेयार की निफाज और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने की सिफारिश की गई है और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टील सेक्टर में शफाफ और पायदार इस्लाहात पर जोर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर। एक बार फिर से आपको ले चलेंगे। कराची में मैरीटाइम एक्सपो की तकरीब इस वक्त जारी है, जहां पर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की मौजूद हैं, जहां पर अपने नाज़रीन को बताएं कि उनकी जानिब से इस वक्त अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। The Chief Minister of Sindh, Abdul Aleem Khan, the Federal Minister of Communication, and Engineer Saleh Al Jasser, the Minister for Transportation and Logistics Support, Kingdom of Saudi Arabia, to please join us for this very memorable photograph. Ladies and gentlemen, with this, the next 3 days of strategic conversations, dialogue, new connections, making sure that the true potential of the blue economy is harnessed, is now beginning in Karachi from the 3rd to the 6th of November 2025. This indeed is the second edition, and we will now have the honorable delegation proceed towards the exhibition halls. May we request you all to kindly remain seated as the distinguished gentlemen make their way towards it, led by the Honorable Chief Guest. Ladies and gentlemen, may I once again request you all to please stay seated.